My dad, rather than just saying thumbs up, he said like, Hmm. "Oh my God, it was a wonderful journey." Do you think that your definition for fitness changed in last couple of months or I could see so many changes into my body, which I never thought there would be. I can lift more, which I never thought I would be able to. So my mindset has completely changed. The most weight I've reduced in my body is from the stomach area. So in today's episode, we are going to talk about journey of Anushka in her own words, how she lost 12 kgs in less than 3 or 4 months, and how she did it with a full-time tech job. And she's also a travel blogger, so she must be indulging in a lot of outside food as well. Our coaching is a lifestyle coaching program, and we teach you how to make fitness a part of your lifestyle. And do make some notes from this podcast, and I'm sure that it is going to help you in your journey as well. Please tell me what changed for you in last couple of months, and how was your experience so far? Like you were telling me something about your dad. Can you share that? Yeah, definitely. I was saying that definitely my friends commented me a lot. Hmm. And they appreciated, they complimented me a lot. But my dad, rather than just saying thumbs up, he said like, Hmm. "Oh my God, you have Hmm. changed so much in your body and your fitness level and in my food patterns and everything." Right. Um, so I think it was a wonderful journey. It was a definitely a successful one when my dad is Hmm. complimenting me. Hmm. So yeah, I mean it was really, really good to work with you. Work with you. Okay, so can you tell me like what was the definition of fitness you were holding on to earlier, and what changed for you in terms of, do you think that your definition for fitness changed in last couple of months or weeks? Oh, definitely. I think earlier, as I told you, like I was always on a path like, oh, I want to lose weight. I want to lose Hmm. weight. I can just eat less and lose Hmm. weight. It's, it reflects for the first few weeks because, it will reflect on your body. But then it Right. takes toll on your health. You lose vitamin, you lose, I don't know, there are so many deficiencies that pop up. With Hmm. you, I remember you saying that, oh, where is your vegetable? And that Hmm. actually me because I was like, I thought that just having onion on the side would be fine, but I actually looked it Hmm. up and there was no vegetable on my plate. So Right. that thing changed. Fiber changed, protein Hmm. changed. Um, Building muscle was never like I never thought that Hmm. building muscle would be my part of my fitness journey. Hmm. But when you incorporated that into my fitness routine and my diet plans and everything, Hmm. I could see so many changes into my body, which I never thought there would be. Hmm. So definitely my fitness goal from just being thin and now Hmm. to having more muscle have changed Hmm. a lot in Hmm. these past. Right. Um, So your perspective towards fitness changed in a way that where you started prioritizing more of strength work rather than just cardio, rather than just burning calories. And yes. yeah. So what difference do you feel when you are just doing cardio and or you're versus doing strength training? Do you feel that you are in a better mood with that? Oh, 100%. Like Hmm. always, whenever I Hmm. think now I'm at a point where I get that high and I kind of like chase that high. So I'm like, oh, Right. let's do that. Let's do just like 20 minutes of yoga. Let's do just 20 minutes of weightlifting, not more. And whenever I do Right. 20 minutes, I'm like 10 more minutes, 10 more minutes. 10 So more, 10 more minutes. it has increased and I'm chasing that high and I love it. There are of course days where I'm kind of like a little low, Hmm. I don't want to do it. And I've learned that from you, Hmm. never to, you know, undervalue yourself, never to say bad things about myself, even if I skip one day. And that has something which has helped me so much in going to the gym the next day when if I like missed it the first day, like the day earlier. Right. Uh, so definitely, I can lift more, which I never thought I would be able to. With my, as with my recent knee injury, I was not very confident of if I can ever get back into walking, first of all. Right. But and sitting in the house, it does make you a little weird. Like, I I just can kind of understand. You'll get all sort of
negative thoughts because you're all by yourself and you cannot even walk. What do you think? What was a better call for you? Was it doing some sort of movement which you could do, or not indulging into any sort of movement? What really helped you in recovering I with think, that? yeah, I think initially not doing Hmm. anything Hmm. helped me stabilize the pain, first of Right. all. Hmm. And it very quickly affected my mood and my mind. And I was Hmm. like, hey, I need to do something. I need to do something. It's not working out like this. Hmm. So I remember I told you I had weights at my home and you gave me Hmm. like a home workout. Do you Right. remember? Like you Yeah. had a plan giving me home workout just for my upper body. Yeah. And that made me feel so motivated, so good. And I remember one thing as well that my doctor said that, hey, you broke your ligament, Hmm. and you need to have blood flow Hmm. flowing around it. Hmm. So lifting weights, getting my heart rate a little up, and then Hmm. calming it down, that helped me get it to recover more quickly than Hmm. just sitting. Definitely. Then just So sitting. so working out definitely helped in my mood and Hmm. all in overall recovery. And Hmm. also, I never gained weight. I'm not sure Hmm. why. I Hmm. never gained weight. Maybe like half Hmm. a kilo up and down, or Hmm. 1 kilo up and down, but that doesn't matter. But Hmm. yeah, never gained weight for those whole Yeah. three months of recovery. Hmm. So I think why you didn't gain weight was basically, I think, nutrition, because we were not even following any sort of diet plan during that time, but just knowing the fundamental, अच्छा वो प्रोटीन लेना, वो चलो सब्जियां लेनी है, वो चलो कार्ब ज्यादा हो गए हैं, let me just balance it in the next meal. So I think knowledge is something which a lot of people don't know about, like how nutrition works. अब काफी लोग सिर्फ एक डाइट प्लान फॉलो करने लग जाएंगे, चलो ये डाइट प्लान है, इसको फॉलो करते हैं एंड लेट्स रिलाई ऑन दिस, एंड वो कर तो लेते हैं, रिजल्ट्स आई थिंक अचीव तो कर लेते हैं, बट अगेन दे फॉल बैक इनटू द ओल्डर देम, बिकॉज दे आर लाइक कि दे आर काइंड ऑफ इन द केज, एंड नाउ वंस दे आर आउट दे आर लाइक कि हाँ अब कुछ भी खाएंगे, कुछ भी करेंगे. बट इस केस में जब आप न्यूट्रिशन नॉलेज के साथ आगे जाते हो, वंस यू नो द कॉन्सेप्ट, प्रोटीन कार्ब्स फैट्स क्या है, then you are able to make better decisions even while having a pizza. So I think that helps you really to counterbalance the calories and maintain your weight in the long run. So I think that really worked for you, the knowledge part. What do you think? I'll I'll tell you one thing. You just reminded me of that. I didn't even know that I followed my nutrition, because now I think back, I did follow everything. I did follow Right. my fibers, my protein. I Hmm. think you have a program, right? Like whenever you start, whenever Habit you building ask, phase. yeah, like when you say that, hey, first of all, build a habit, right, for Hmm. 21 days. Right. That is ingrained in me now. Hmm. Like Right. even if I go out, I will be eating uh, just like what you have taught me, something like that. Right. Right. I have, and I'm not even talking. I'm not just talking US. I'm talking India as well. I Right. always have my carrots or like Hmm. broccoli on the side, and Right. so do my parents. So it's a win-win for me and my family. Right. What was your parents' reaction when you went to India and you were kind of trying to balance your meals and everything? Like, what was their reaction? Were they mad Uh, at you, or were they like, "Oh, no, nice change"? my mom was very happy because I think my mom has been always been like very on top of her health. So she Right. was like, अरे सब्जियां खा रही हो इतनी, रोटी नहीं Hmm. चाहिए, और रोटी नहीं Hmm. चाहिए तुम्हें. मैंने कहा नहीं. Right. And I remember like I always used to crave bread and butter, but I used to go a little beyond eating bread and butter. Beyond. Yeah. 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 She's like, ब्रेड एंड बटर नहीं खा रही हो तुम आजकल, मैं तो तुम्हारे लिए ऑलरेडी लेकर आई हूँ पहले से, लाइक ऑलरेडी ला कर रख दी मैंने, और तुम Hmm. कैसे नहीं खा रही हो. मैंने कहा पता नहीं मेरा पेट भरा है कि या पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा. उतनी क्रेविंग्स भी, आई थिंक माय क्रेविंग्स हैज आल्सो लेसन्ड, स्पेशली माय Right. स्वीट क्रेविंग्स has gone a little lower Right. for some Right. days. Around my periods it's definitely higher, but Yeah, I've right. replaced with dark chocolates or like Hmm. yogurt, blueberries, Hmm. but Hmm. yeah. I think once you start eating better ना, your cravings automatically get better. अब आप ज्यादा से पहले सिर्फ कार्ब्स खा रहे थे. अब जब आप हाँ, सिर्फ कार्ब्स खाते हो, मेजोरिटी ऑफ द इंडियंस या इंडियंस लिविंग अब्रॉड, उनकी डाइट जनरली रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स होती है.
अब आप सिर्फ अगर कार्ब्स खा रहे हो, जैसे आपने रोटी सब्जी खाई दोपहर को, रात को भी रोटी सब्जी, सुबह आपने पोहा या से फ्रूट भी खा लिया, ना ऑल ऑफ दीज फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ कार्ब्स। अब जब आप हम्म, सिर्फ कार्ब्स खा रहे हो, आपके ब्रेन को क्या सिग्नल मिलता है? ओ, दिस पर्सन लिव्स इन एनवायरनमेंट जहाँ पे सिर्फ कार्ब्स अवेलेबल है। अब कार्ब्स हाँ आर इजीली डाइजेस्टेड बाय द बॉडी। कार्ब्स हो जाते हैं ग्लूकोज में कन्वर्ट, देन शुगर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड बॉडी के लिए शुगर को डाइजेस्ट करना इज वेरी इजी। अब आपकी हाँ बॉडी क्या क्रेव करेगी जब आपको भूख लगेगी? Sugar, right? So that is where your sugar cravings and these kind of, or even snacking craving comes from, because जो refined snacks होंगे like say chips, वो भी आपकी बॉडी में बहुत easily digest हो जाते हैं, like very हम्म, fast, and you get hungry again. So now your body is in that cycle of craving carbs or craving sugars again and again. But once you replace your portion, से आप 4 रोटी खाते थे उसकी जगह आपने 2 रोटी कर दिया, साथ में आपने थोड़ा प्रोटीन डाला, थोड़ी सब्जियां डाली, ना प्रोटीन एंड सब्जी आपको फुल फील करवाती है, लाइक दे कीप हाँ यू सेशिएटेड फॉर एटलीस्ट 3-4 आवर्स। नाउ यू सी कि यार मेरे को मन नहीं कर रहा है इतना, मतलब शाम के टाइम खाने का, मेरा मतलब वो हो नहीं रहा है ऐसा। वो हाँ यस नियत हो सकती है, बिकॉज तुम्हें याद है कि मैं शाम को ये खाती याद हूँ है। या मैं खा, वो नियत में आ सकता है, बट नियत कैसे चेंज होती है? फ्रिज बिकॉज खोल के अकाउंटेबिलिटी देखती रख। हूँ मैं। हाँ। या यू आर हाँ। लाइक, फ्रिज खोल के मैं देखती हूँ, फिर मुझे लगता है अरे यार उतनी भूख नहीं लग रही अभी, तो बाद में हाँ। खाऊंगी कभी, और वो बाद बाद में खा। अगला दिन हो जाता है, मुझे लगता है अरे हाँ। भूख, मतलब मन ही नहीं किया क्या, मतलब क्या हो गया ये, ऐसा। राइट, या राइट। तो आई थिंक वो साइकोलॉजी माइंड की वैसी बन जाती है, बिकॉज आप रोज रोज खा रहे हो, आपको लगता है आप इसके बिना रह ही नहीं सकते हो। बट हाँ जब आप कुछ सही करने लग जाओगे, जो 90% लोग कभी कुछ सही कर ही नहीं पाएंगे इन देयर फिटनेस एंड न्यूट्रिशन जर्नी, बिकॉज दे आर मिसगाइडेड और दे आर फॉलोइंग द मिथ्स कि हाँ चलो हाँ कार्ब्स कम कर देने हैं, या 7 बजे के बाद खाना नहीं खाना है, या इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है, मील हाँ स्किप करनी है। इससे आप अपना रिलेशनशिप विद फूड और खराब कर रहे हो। यू आर या जस्ट एडिंग अप टू योर क्रेविंग्स इन द लॉन्ग रन। अब मैं या आपको बोल लूं शुगर खानी ही नहीं है, वर्सेस मैं आपको बोल लूं चलो ऑल्टरनेटिव ले लो, डार्क चॉकलेट ले लो, या शुगर हाँ फ्री आइसक्रीम मंगवा लो, या कोक आप बहुत ज्यादा पीते हो, मैं बोलूं कोक पीनी नहीं है, कुछ मीठा पीना नहीं है, मैं कहूँ यार डाइट कोक ले लो। सो ऑल्टरनेटिव्स विल वर्क इन दिस केस रादर देन रिस्ट्रिक्टिंग यू कि ये करना ही या नहीं है। व्हाट डू यू या थिंक अबाउट इट? I 100% agree. Do you remember when I reached out to you? I was like, you know what, Abhinav, I ate so much of bread butter. Remember, या। like because I या। have cravings for that. And या। remember, I told, and I was like, oh my God, you're gonna scold me a lot. मुझे लगा आज तो मुझे डांट पड़ने वाली है, मैं गई। ठीक है, इतने दिन से मेरा इतना अच्छा चल रहा था, आज मैंने ब्रेड बटर खा के सब बर्बाद कर दिया। राइट। You replied to me कि कोई नहीं, खा लिया ना, मजे किए ना, focus on that, make your mind happy, and once you are happy you are not gonna do it again, don't worry about it, मतलब ऐसा तुमको ऐसे cravings नहीं हो रही होगी, ठीक है, it's fine, राइट। whatever, it's fine, ठीक है, just हम्म। don't repeat and you'll be fine. And I was Yeah, like, wow, whatever is done, just do, I yeah, think, have your lessons, move ahead कि अगली बारी जब आप ब्रेड बटर खाने जाओ, instead of 3 slices, how can I stop myself at a single slice? yeah, What yeah, is that strategy? What did I do wrong there? Was I very hungry? Like was I too hungry by yeah, then? Like, should I have had like a protein shake before having a bread and butter? exactly, Or yeah, like maybe I should drink more water throughout the day to, yeah, settle down my craving. So just ask yourself the right questions. And next time when you are at that spot, don't be yeah, guilty eating bread and butter, because it's a natural, food हम बचपन से खा के बड़े हुए हैं। हम जाते थे पहाड़ों में घर वालों के साथ, फैमिली जाती थी, सुबह वो टोस्ट आता था, टोस्ट में से ब्रेड निकलती थी, हम ब्रेड लगा के खाते। So it's like a, we have so many memories with that yeah, particular food. So it's not wise to completely have a very hateful relationship with that bread or butter or whatever that food is for you. But it's very important for you to, in order to grow your self love and self discipline, in order to achieve your fitness goals, you also yeah, need to set limits on yourself. Right. So yeah, set the right limits, but don't over restrict yourself, is something I think I always try to teach my clients. अगर कोई ये सीख जाता है ना, लिमिट्स लगाना अपने ऊपर, और ऑल और नॉन थ्योरी में नहीं जाना, चल बाहर भी जा रहा हूँ मैं पिज्जा खाने, let me just be very mindful about it. Let me not have the entire pizza. Let me have some pizza and some healthy stuff along. If I can counterbalance both, then definitely I'll be in this game for a longer run. for Right. a So long I time. think for a long term, even if you don't have a coach. Right now, I'm not coaching you like directly, like you're
kind of occupied in your life. But still, I am very sure that the fundamentals which we taught you will stay with you throughout your life, unless and until you are like कि नहीं करना है, मतलब I am done, like I am, को कोई फर्क नहीं पड़ता वेट गेन से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अपने आप को शीशे में देखने से, then it's fine, then it's But totally your call. but I'll say what I've learned in this journey of weight loss and building muscle is not कि मुझे फर्क नहीं पड़ता. अगर मुझे हम्म फर्क ना भी पड़े, मेरे बॉडी को तो फर्क पड़ेगा ही. बॉडी मतलब बॉडी माइंड दोनों को पड़ेगा आपके सर. जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, पीरियड्स टाइम हम्म पे ना आना, हम्म हॉर्मोन्स में सब हो जाना, हम्म विटामिन्स पूरी डेफिशिएंसी हो जाना है. तो हम्म अगर मैं परफेक्ट भी अगर दिखूं कभी एंड मेरा न्यूट्रिशन सही ना रहे, हम्म this this thing that you have taught me, this habit that you have taught me has हम्म improved everything. हम्म Fiber is the only thing that has improved my hormones. हम्म. I'm not even kidding. मेरा Were सबसे you बुरा, facing hormonal issues before joining the training? I never faced hormonal issue, but I was, I mean, no, I mean, I did face, but it was not like severe. It was not severe. I did face hormonal issues. Like ऐसे periods तो generally late, थोड़े एक हफ्ते लेट, ज्यादा crazy भी नहीं था, एक हफ्ते लेट आते थे, या थोड़ा बहुत ऐसे मतलब hair loss and all that, ठीक है. And I'm हम्म like मैं क्या हम्म कर रही हूँ, मैं तो कम खा रही हूँ, हम्म कार्ब्स तो मैं खा ही नहीं रही, तो फिर मैं क्या गलत कर रही हूँ, ठीक है, हम्म. ऐसा लगता था मुझे. Right. And then uh, I when you told me कि अरे where is the vegetable on the plate, and I realized and I started eating it, I started seeing the change and हम्म everything. And हम्म. फिर पढ़ने में कि हार्मोन्स को ये सही करने के लिए वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स जहां भी जाऊं मैं वेजिटेबल्स, हर जगह वेजिटेबल्स एंड Right. एक्सरसाइज, वेजिटेबल्स एक्सरसाइज. एंड आई एम लाइक वाओ, हम्म वाओ, ये तो पता नहीं था मुझे. एंड हम्म वन थिंग यू टॉट मी, नेवर कट आउट कार्ब्स. आई थिंक हम्म मैं आपको एक चीज बताऊंगी, अगर मैं कभी भी किसी और ट्रेनर के पास गई हूँ, they'll हम्म always tell me to cut carbs हम्म completely. हम्म And that has shown me result. I'm not saying हम्म that will show हम्म me result first 3 weeks, but हम्म 3 हफ्ते बाद जो डाउनफॉल आता है हम्म एफिशिएंसी में, हेयर लॉस में, पीरियड्स तो हम्म चलो इज completely messed up, हम्म. completely messed Completely up. messed up. Yeah. No carbs, पीरियड्स आर गॉन, ये तो आप समझ जाओ, ठीक. सो हम्म यू टोल्ड मी वन थिंग कि पोर्शन कंट्रोल करो. कार्ब्स को कभी कंट्रोल करने को इतना नहीं, इतना क्रेजी नहीं बोला कि नो जस्ट रिमूव कार्ब्स. हम्म पोर्शन कंट्रोल, कार्ब्स कंट्रोल, प्रोटीन कंट्रोल, वेजिटेबल्स कंट्रोल हैज हेल्प मी हम्म लॉन्ग. सो अगर मैं गिव अप भी कर दूं अपने अपने लाइक बॉडी लुक्स पे, हम्म. मैं कभी अपने इंटरनली गिव अप कभी नहीं करना चाहूंगी, लाइक इंटरनली. Internally. राइट. सो बहुत अच्छी बात बोली आपने कि फूड इज नॉट जस्ट फॉर योर आउटर, कि आपकी लुक्स कितनी इंप्रूव हो रही है, आपको कपड़े कितने फिट आ रहे हैं. ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन हैज दीज गोल्स टू गेट बैक इनटू देयर क्लोथ्स और लुक द सेम हाउ दे वर लुकिंग इन देयर ओल्ड पिक्चर्स. सबको वो करना है बिकॉज लुक्स मैटर करती है हर एक इंसान को एक सब्जेक्टिव लेवल पे. बट चाहे आपके लिए वो मैटर नहीं करती हैं, देयर आर पीपल जिनके लिए लुक्स मैटर नहीं करती है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अच्छी न्यूट्रिशन नहीं चाहिए. इवन दो आपके पोर्शन साइजेस ज्यादा हो सकते हैं बिकॉज यू डोंट केयर अबाउट द वेट, बट इफ यू स्टिल ईट राइट, स्टिल ईट इन बैलेंस, कि आप हर एक मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट पे फोकस कर रहे हो. और बहुत सिंपल सी चीज है, न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियंस ने बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट किया हुआ आपको फैंसी चीजें देके, बट न्यूट्रिशन इज द मोस्ट सिंपल थिंग इन दिस वर्ल्ड. I can tell you it is the most simple thing to understand, but yes, it's little difficult to execute because आपको प्लान करनी पड़ती है for nutrition. दिमाग लगाना पड़ता है. काफी लोग दिमाग नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ खा रहे हैं जो सामने, अच्छा ये भी खा लो, ये भी खा लो, ये खा लो. उससे क्या हो रहा है कि आपकी इंटरनल हेल्थ भी खराब हो रही है. आपका थॉट प्रोसेस, आप किस तरह से आपके एनर्जी लेवल्स किस तरह से हैं, आप कितने प्रोडक्टिव हो अपने काम को लेके, ये डिपेंड करेगा टोटली आप क्या खा रहे हो. से अगर आप से बर्गर खा रहे हो मैकडोनल्ड्स का एवरीडे, फ्राइज खा रहे हो, वर्सेस यू आर से ईटिंग अ होममेड बर्गर और से होममेड एयर फ्राइड फ्राइज, what do you think is going to give you better energy level? It's a very simple question. What do you think is going to be better for you? Definitely the homemade stuff, you would have full control on what you put, right? Right, And right. my air frying like fries, like that will give me more control, more energy throughout the day. It's
You are going to feel better कि अरे वाह, you made food सो at यहाँ home. पे समझना न्यूट्रिशन को वो नहीं है डिफिकल्ट। हर एक इंसान को पता है ये सही है ये गलत है, हर एक को पता है इसका ये ऑल्टरनेटिव है। बट क्यों डिफिकल्ट है? बिकॉज लोगों को दिमाग लगाना नहीं है। लोगों को आधा घंटा 40 मिनट रोज का अपने खाने को प्लान करने के लिए नहीं बनाना। उनको है वो मीटिंग ले रहा था तो मुझे ये मंगाना पड़ा, मैं बहुत ज्यादा बिजी। अरे तो पहले प्लान करो Yeah. ना भाई। ग्रोसरी शॉपिंग सैटरडे संडे को करो ना, थोड़ा मेन्यू बनाओ ना अपना पूरे हफ्ते में क्या खाना है। आप एवरीडे उस जगल में जा रहे हो, जाके सोचते हो मीटिंग खत्म होने के बाद ओ क्या खाना था। देन इट इज गोइंग टू बी अ नेवर एंडिंग बैटल फॉर यू। यू हैव टू मेक श्योर दैट एक रात पहले एटलीस्ट डिसाइड करो what you are going to eat the entire day. This is how you balance work, your health, your relationships, and your overall well-being. So I think, yeah, that's very simple, but yeah, not very simple No, at the same time. yeah, you're right. I remember when I was facing an issue, जब एक तो मैं I've been going through this office issue थोड़ा for a while, but I remember कि I reached out to you. I'm like कि काफी tough हो रहा है घर में खाना बना, especially when I also broke my knee, right? So I was like काफी Right. tough हो रहा है, मैं अकेले आपके तो फ्रेंड्स आ रहे थे तो बना हाँ रहे हैं मेरे आपके लिए। फ्रेंड्स आके पहले पहले 2-3 वीक्स तो मेरे फ्रेंड्स आके उन्होंने खाना दिया है मुझे एंड राइट। हेल्प किए, सो हम्म। दैट ऑल्सो वेरी नाइस। एंड देन लाइक जब मैं थोड़ा थोड़ा सा लाइक मैं नॉर्मली बैठने लगी एंड चलने लगी, नॉट दैट टू दैट एक्सटेंट कि इतना परफेक्ट चल रही थी, लाइक अ लिटिल बिट आई कुड स्टैंड, आई आस्क्ड हम्म। यू लाइक व्हाट इज द इजीएस्ट वे, you told me हम्म। overnight, and I could हम्म। put literally anything for overnight oats, anything in my राइट। overnight oats. राइट। That changed my whole lunch game. That हम्म। literally changed my whole lunch game. It was so nice. हम्म। Helped me maintain satiety. Helped me maintain my protein for the overall meal. Helped me हम्म। maintain क्या कहते हैं जैसे मैं fruits डाल देती थी, so my fiber and like everything, हम्म। and obviously nuts तो fiber तो है ही, and हम्म। it was like life changing. So I'm just saying like कि बाकी लोगों के लिए भी, I know it gets difficult with life, but ऐसे quick options बहुत available हैं जो कि healthy भी हो क्विक सकते हैं. ऑप्शन, थोड़ा You दिमाग need लगाओ, बस थोड़ा shortcut. सोचो। थोड़ा हाँ सोचोगे आपको मिलेगा। अच्छा इसको हाँ बनाने में टाइम लगता है, सुबह टाइम नहीं होता, बट सबसे इजी ऑप्शन क्या है? अच्छा दही है, ग्रीक योगर्ट है, अच्छा ये तो बना बनाया मिल जाता है, लेट मी ईट। और सबसे इजी ऑप्शन क्या है? हाँ फ्रूट को बनाने में कोई टाइम नहीं लगा, लेट मी ईट अ फ्रूट। अब आप कहोगे yeah सुबह टाइम ही नहीं होता, आई एम रशिंग ऑफिस, कॉफी पीने का टाइम है आपके पास, स्टारबक्स से रुक के हैं खाना खाने का टाइम नहीं है आपके पास। सो इट इज जस्ट अबाउट द प्रायोरिटीज। लोगों को पता है वो क्या कर रहे हैं, बट दे आर जस्ट लिविंग इन अ वेरी एक फॉल्स वर्ल्ड उन्होंने बनाया हुआ अपने दिमाग में। हाँ बिजी था इसलिए नहीं किया, हाँ यार मीटिंग खत्म हुई तो उस टाइम कुछ था नहीं तो मैंने ये मंगवा लिया, बिजी है, सिटिंग जॉब है तो वेट तो बढ़ना ही है ना। मतलब वो एक फॉल्स डिलीमा में ये जी ना रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। उनको पता ये ही नहीं है कि भाई मतलब सिटिंग है बट ठीक है, कितने 8 घंटे है, 10 घंटे सिटिंग है। 8 घंटे तुम सोते हो, 6 घंटे तुम्हारे पास फिर भी है, क्या कर रहे हो तुम 6 घंटे में? अच्छा उसमें आराम कर रहे हो। पहले भी तो यूजुअली तुमने 9 to 5 जॉब में कुछ मेंटली एग्जॉस्टेड हो तुम, फिजिकली तुमने बॉडी को नहीं मूव किया, और आपकी बॉडी के लिए फिजिकल एक्सर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट in order for your brain to function better, right? So yeah I think, yeah, that's about it. So Anushka, what results were you able to achieve in the period of say last couple of months from the time you started training with me? And like, can you just be very specific with the results you achieved in this yeah entire time? I have my वो क्या कहते हैं my fit index thing, Yeah. 9.75 kgs. Oh, I've wow. lost Wow. 9.75 kgs. ठीक है, Hmm. and Is it also showing fat percentage to you? it shows body fat, but it's on a scale, so I'm not sure if that is like, accurate. Yeah, But not that accurate. let me tell you, even if it's not like perfectly accurate, I can tell you what it was. From 29.8 to 25.6. Oh, wow. That's great. Not that accurate. I think you might have lost more, but Yeah, 9.5 yeah. kg of body weight you have lost. Other than Yeah. that, like It's what in percentage. So percentage? The yeah, fat percentage. the body fat percentage. Yeah. So if you calculate it, so body fat ज़्यादा होगा, मतलब Right, values right. के with Yeah, just yeah. But how much weight did you lose in last couple of 9 months 9.75 kg. with the travel trip in India as well, right?
with travel trip, with knee with my injury. broken knee, Yeah, everything included. I'm still everything. I'm still weighing 61.75. Like I'm still in that I'm still Right, weighing like right. I don't know how, but I've maintained it. Your habits, yeah. It's as simple as that. As long as you're not eating like a mad person once again, just because you're sitting at home, just because something is going in your life, there is no way that you'll gain your weight back again. Right? If you're maintaining your eating habit, that is the only thing you need to maintain your weight. Other than that, in other areas, what results did you feel in yourself? Like one more thing that is very nice that I was very always scared of Hmm, was my visceral fat, which hmm. was very important for me, hormonal wise and everything. Right, right. My visceral fat went from 9 to 6. Oh wow, that's also great. I think we can work more on that, but It's definitely it is kind of in the healthier range now. 6 is the good visceral fat. So Six I is a reached good test. 6 is the So for good. for those who don't know visceral fat बेसिकली आपके organs के अराउंड होता है, belly एरिया के पास पास फैट ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है. तो belly हाँ, एरिया का जब फैट बढ़ जाता है तो visceral फैट भी आपकी बॉडी में बढ़ जाता है, जो बेसिकली आपके organs के अराउंड फैट होता है. आपका लिवर हो गया, किडनी हो गया, जो भी टमी एरिया के आसपास ऑर्गन्स है, उस पे हम्म, एक्स्ट्रा लेयर ऑफ फैट आ जाती है, विच इज नॉट हेल्दी फॉर योर बॉडी. तो जब आप कोई कसरत या कुछ अच्छा खाना शुरू करते हो, स्टार्टिंग में आपकी बॉडी सबसे पहले ये हार्मफुल फैट को बाहर निकालेगा. दैट इज योर विसरल फैट. सो मे बी इनिशियली फॉर सम पीपल हु हैव अ लॉट ऑफ विसरल फैट, they might not see a very significant weight loss in the beginning, हाँ, right? कुछ केसेस में हो सकता है, स्पेशली मैंने वुमेन के साथ देखा है, men comparatively lose weight faster, but with some yeah, women who have high levels of visceral fat, they will first of all start with losing visceral fat in the body, and then their body will start losing the rest yeah, of the fat. But it is totally. very important for you to just work on your visceral fat, because that dedicates your health as well. Even if your weight is less, कई लोगों का weight 50 किलो Yeah, होगा but visceral fat होता है 10-12, so that is yeah, also not healthy. So it's not always about the external weight. yeah. So Above 10, it's considered high. It's considered yeah, dangerous. yeah, Uh, then yeah, then 7 to 10 is acceptable. And I yeah, got 6, which comes under good. I cannot believe that from right. 9 to 6, because visceral fat is the hardest to lose, and it's like, Hardest to lose, yeah, yeah, yeah. So and सामने से देख भी नहीं ना पा रहे, आपके पास कोई मोटिवेशन भी नहीं है वो wait. विसरल फैट कम करना आज. हाँ, ऐसा तो है नहीं ना. तो वो तो होते होते ही होगा. तो दैट्स wait. अबाउट इट. बाकी और कौन से 2-3 एरियाज लगे आपको जहाँ पे यू हैव सीन सिग्निफिकेंट चेंजेस इन योरसेल्फ? इज दिस द माइंडसेट, इज दिस द क्लोथिंग और व्हाट लाइक? Definitely mindset has improved a lot. One हम्म, thing that I would like to mention is I'm not like restricting anything. Like I'm not restricting myself to eat nothing. Like I'll be हम्म, like, oh, no sugar for a month, हम्म. because the next month would be very hard for me. I'll be राइट, craving. So राइट, found a very normal way to deal with this. And I always tell myself, hey, this will be available the next day. So why don't राइट. you just a tad bit and then make it, maybe just eat it after 2, 3 days, something हम्म, like that. So my mindset has completely changed. My mindset हम्म, has improved a lot. Secondly, I'll say that in 2020, the clothes that I got in हम्म, COVID, they never fit me. हम्म. 24, they finally fit me. So, it's a वाह. great change. Wow, I think that is the biggest thing, biggest achievement, because I think वो वेस्ट हो रहे थे, आप उनको फेंकने ही वाले थे, फिर आपकी मैं जिंदगी में एक सीखने वाली थी। मसीह, फिर एक आपकी जिंदगी में एक एंजल आया, और एंजल ने कहा नहीं, मैं आपकी हेल्प करूंगा ये कपड़े डालने के लिए. तो ये लो आके कपड़े Yeah. वापस हो जाओ फिर. So I think yeah, that is a nice story to portray for the media. Yeah. Right, so Yeah. that's it. I That's think it. uh, I think you're very right. मैं फेंकने ही वाली थी. I always Hmm. thought I'm not sure why I'm not throwing this away. Because I was in Boston, then I came to Seattle. I was like, now is the perfect time to throw it away. I was like, you know what? Let's just keep it. I'm like emotionally attached to this. I'm not sure what to do. And Right. then finally,
I'm like, no way. Like, I'm literally a little sad because Okay. the clothes that I bought in Seattle are not fitting me, हाँ. which is really right. Like, हम्म. because वो सब बड़े हो चुके हैं, सारे कपड़े बड़े हो चुके हैं, एंड मैं ऐसी हो अच्छा, गई हूँ वो कि अब ये प्रॉब्लम फिर भी ठीक है, आई थिंक जो दीज आर सियाटल गुड में थे, प्रॉब्लम्स टू हैव. yeah, हाँ. exactly. All first the major change I've seen is in all my skirts. हम्म. सारी स्कर्ट गीली हो चुकी हैं सब, मतलब बुरा लग रहा है कि अरे यार इतने पैसे गए मेरे सियाटल में। हम्म. बट हम्म. मैंने सारे अंदर से बॉस्टन वाले कपड़े निकाले पुराने, कि हम्म. चलो ठीक है यहाँ की स्कर्ट ये निकाल आ लेती गए. हूँ, टॉप निकाल लेती हूँ, और वो आ भी रहे हैं, आई एम लाइक वाह, कोई हम्म. नहीं, पीपल विल सी मी इन ओल्डर क्लोथ्स, दैट्स ओके। हाँ. दैट्स ओके. फाइन। दीज आर गुड प्रॉब्लम्स टू हैव, आई थिंक. These are the, लो, I लोगों love को, this problem. हाँ, लोगों को ये होना चाहिए यार, ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मेरे मेरे को बेटर प्रॉब्लम्स होनी चाहिए. सो गोल इज नॉट टू जस्ट लूज वेट और एनीथिंग, गोल इज टू हैव दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स अगेन, कि Good मेरे problems. नए कपड़े मुझे फिट नहीं आ रहे हैं, पुराने आने लग गए हैं जो मैं चाहती थी आए हैं, और मेरे को नए Yeah, कपड़े फिट नहीं आ रहे हैं. सो चलो ठीक है, दान कर दो वो कपड़ों को, वो रखोगे वही फिर लगेगा। दोबारा, फिर दोबारा वहां पे कभी ले जाएगी लाइफ. ठीक है ना. तो वही उसको दे दो, उसको बांट दो, दैट वही वुड बी ग्रेट. I'll be चलो. like, thank you for my हम्म. journey, but bye. You know. चलो, दैट्स ग्रेट. One more आई thing थिंक. that I would like to say is, what I've seen is, my stomach is like very flat and non-bloated. Is राइट. uh, राइट. though the bloating comes and goes, but that is okay. But like my stomach, the most weight I've reduced in my body is from the stomach area, which is the बेली hardest फैट. portion. My क्या आपने, belly, क्या आप रोज 1000 क्रंचेस कर रहे थे बेली फैट लूज करने के लिए? 1000 क्रंचेस तो नहीं किए मैंने। हाँ. 1000 क्रंचेस तो नहीं। आपका आपका राज क्या है बेली फैट लूज करने का, मैम? सब जानना फाइबर, चाहते हैं इंस्टाग्राम. मैं हाँ. मैं फाइबर बोलूंगी। फाइबर, फाइबर प्रोटीन को बढ़ाना, फाइबर को बढ़ाना is इज. the main thing. And obviously strength training helps a lot, but राइट. fiber ने जितनी मेरी help की है. And also, I think I remember telling you this, the seeds, some of the pumpkin seeds and flax seeds that I राइट. had, राइट. which helped me lose a lot of weight, obviously, but and get all my deficiency cured. So that was a good जस्ट health. डिस्क्लेमर दूंगा गाइस, ये सुन के बस पंपकिन सीड्स पे टूट मत जाना आप, बिकॉज Please. सबको कुछ रिक्वायरमेंट में चाहिए. उनको लग रहा है कि पंपकिन सीड ने उनकी हेल्प की है, दैट इज ऑल्सो पॉइंट ऑफ सब्जेक्टिव. बट ऑल दिस वाइल शी वाज फॉलोइंग अ गुड बैलेंस न्यूट्रिशन, एंड शी वाज नॉट ओवरली रिलाइड ऑन जस्ट पंपकिन सीड. Proteins were there, carbs were there, fiber were there, some sort of seeds were there which she usually liked, just to, again, हर एक के लिए different purpose हो सकता है. But overall, the main catch here is that she was consistent. She was focusing on the fundamentals, like increasing her protein and fiber. So she don't always crave food. She was doing strength training at least 3 to 4 times a week. And along with that, she was quite active. She was also walking a lot when she didn't, when her knee was fine. But after she broke her knee, she was not walking that much, but still because of she was maintaining her nutrition, she was able to maintain her weight, not go beyond because of the lesser calorie expenditure, but at least you were able to maintain that weight after that period, right? So is that it? Yeah, Is that the that is it. secret? That is Chalo, it. And that's I great. love dancing too. So, the dancing was a good Hmm. cardio, a relaxing cardio to do when I'm not strength training. So that was always Yeah. on top. Yeah, chalo. I think cardio wise, you should always choose an activity which you really enjoy. For some people, it can be just a walk, a run, uh, Zumba, dance, karate, Mhm. martial arts, whatever you want to do, like you can do it. So that's it, Anushka. Thank you so much for your time, and it was lovely coaching you. I wish you all the best from here. And definitely, once you are settled with everything that is happening around, we'll set another goal and we'll just make sure that you go to the next level. Thank you so much for all the help. And yeah, you came like a blessing in my life when I actually probably needed you the most. And my body and my mind needed you the most. And it was really, really helpful. You helped me achieve some great results, and the success is obviously right there in front of you.
Yeah. And just wanted to thank you once again for this whole journey. Yeah, Thank you for staying committed and being true to yourself. definitely. Yeah. Thank you.